Hello students, today we will discuss about the topic mole concept from chapter 1. The mole concept is started by the some formulas which are given as the first is gram atoms of an element is equal to mass of element in grams which is W and atomic mass of element which is M. Okay, then the second formula is gram moles of a substance, that is mass of substance and molecular mass of substance, and the third is gram moles of gas equal to volume in liter of the gas at STP. The STP is standard temperature pressure upon 22.4. The fourth is number of atoms of an element is equal mole atoms into Na, and the Na is Avogadro number which is equal to the 6.022 10 to the power 23. And the fifth is number of moles of a substance equal to equal to Na which is always equal to 6.02 to 2423. And the sixth is number of molecules of a gases to equal its volume in liters at STP. STP is a standard temperature pressure into Na means Avogadro number which is equal to this value. And we will start some questions from these formulas. The question first is calculate the number of moles in 49 gram H2SO4, and so first question is calculate the number of moles in 49 ग्राम H2SO4। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है H2SO4 का 49 ग्राम है जो कि इसका गिवन मास है। तो वी विल यूज द फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू द गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट मीन्स N इक्वल टू W/M। एंड W गिवन है कितना है 49 ग्राम एंड M मोलर मास आप निकालेंगे। हाउ टू फाइंड मोलर मास? calculate the atomic masses of H, S and O and multiplied by number of atoms, so that is equal to the 98. For H2SO4 the molecular mass of is equal to 98, so we will put the all values. N is equal to W/M, W is 49 and M is 98, that's the N is equal to 1/2 and the answer is 0.4 mole. That means in this question गिवन मास में जो भी H2SO4 से मोल्स हैं वो 0.5 मोल्स गिवन है। एंड द अदर फार्मूलाज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड इज N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एंड द थर्ड इज W/M इक्वल टू V/22.4 लीटर। एंड इन अदर क्वेश्चंस द नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स upon Na. Na means Avogadro number which is equal to the value of 6.02 to 23. ठीक है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है आपको इतने मोल सोडियम में। ठीक है, तो वी नो दैट द फार्मूला number of moles N equal to given particles upon Na, so we assume the given particles is X, so 0.2 N की वैल्यू 0.2 है तो 2 पुट करेंगे, 0.2 इक्वल टू X बाई Avogadro नंबर and the Avogadro number is this value 6.02 to 23 and multiplied by 0.2 and the answer is 12.044 22 atoms. And many more questions solve from these topics and send me.